Ekaki Chapter 1, Presence. Yeah, I've been wanting to check this out for a while, and yeah, I'm just gonna get to it right now. I'm just gonna get to it right now. Oh, alone. It already looked cheesy. Yeah. Again, if you want to do something for a living, you have the chance, like a content creator or something, or a YouTuber. You have the option to do it yourself. Guys, अगर आपको ये फाउंड फुटेज मिलती है, तो इसका 100% मतलब ये है कि आप मर चुके हैं. नहीं, मरा हुआ समझ के अनफॉलो मत कर देना प्लीज. आर्यन शांत हो जा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई. क्या कुछ नहीं होगा? तेरे को नहीं मालूम है? लोग मरा हुआ समझ के तो फट से अनफॉलो करते हैं. अरे वो नहीं कह रहा हूँ, मैं सिचुएशन की बात कर रहा हूँ. कुछ नहीं होगा. कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे कुछ नहीं होगा? सब तेरी गलती है. मेरी क्या गलती? मेरे पे क्यों चढ़ रहा है? तो इधर लाने वाला कौन? तू. तेरे वजह से इस महंगे बंगले में सस्ती मौत मरने वाले हम लोग. कोई नहीं मरेगा भाई. देखा चालू हो गया नीचे तुम्हारी चिन. अब देखना हमारी मौत का नंगा तमाशा देखना, और गंदे डार्क डैंक कमेंट्स करना हमारे रील के नीचे. It's funny watching it and seeing, you can tell one person's trying very hard. The other one's just like, I'm just going to go through these lines. He's like, you see him look off to the side and try to think what he's supposed to say next. Stay away. That's one thing I don't like in movies, where they like start at a crucial point and then they go back and past. Of course it's going to be crap, man. It's a YouTube show. It's a YouTube show. The thing is, someone worked hard on it and it looks like they had fun with it. Sometimes you just have to respect it for that. Sometimes you have to respect it just for that. Hello दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जा रहे हो तो ये री लाइन. I don't like it when they do this crap. I don't like that. Either shoot the whole thing in vertical, or don't do it at all. Use the excuse of having a GoPro or something. Yeah, if you're gonna do it like a found footage, use something like a GoPro. I mean, it just this jumping back and forth always aggravates me. जरूर देखना, हम जा रहे देश के अनोखे अनडिस्कवर्ड कोने में, जहाँ पर है scenic landscape, ravishing waterfalls, exotic flora and fauna, couple-friendly rooms with welcoming faculty. Only 23 hours walking distance from Nagpur railway station west. ये है पैराडाइज ऑन अर्थ. अबे घंटे का पैराडाइज. ये दिखाने लाया तुम मुझे? ये आधी नंगी आंखों से ये देखूं मैं ये पैराडाइज? अबे मैं रील बना रहा हूँ ना, बीच में क्यों बात कर रहा है? क्यों ना बात करूं बे? सालो एम्स्टरडैम के सपने दिखा के अम्बोरा लेके चल रहे. और ये कैसा नाम हुआ? अम्बोरा. ऐसा लग रहा है कि साउथ के पिक्चर का विलन का नाम है कि भाई अम्बोरा आ रहा है, बहन बेटियों की इज्जत बचा लो सालो. अबे तो फिर कान में क्यों भौंक रहा है? कार्तिक नहीं बोला ना हिडन जेम दिखाऊंगा, हिडन जेम. ये कौन सा हिडन जेम है? पहले तो पीछे हो. ये फर्स्ट क्लास है, आगे आने का नहीं, अपने जनरल में बैठो. और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने ना हमसे छुपा के रखा था. पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है, तो हमारे लिए तो हिडन जेम ही हुआ ना. चप क्या कर रहे हैं? चूसा लगा रहे हैं क्या पीछे? हाँ, इसके आरआर बहुत बढ़ नहीं गए हैं. ज्यादा बड़बड़ की ना तो एम्स्टरडैम के नाके पे नंगा भेज दूंगा. अब अगर चू चा ही हाँ हूँ हाँ की भी आवाज आई है पीछे से, कसम से छत पे बैठ के छैया करवाऊंगा, समझे? I gotta say, the audio is kind of poor, though. Again, they probably don't have like the high-end equipment that's needed, but like
with each individual person speaking, it sounds a little tinny. The audio sounds a little tinny, which is funny because at the beginning of the video, it says best to wear a headset for the audio. But when the audio isn't good, you want people not to have it directly in their ears. Like I have it coming out of my speakers, but I have decent speakers, which are used for like music mixing. So I'm like hearing the tin coming out of their speaking. हो गई चुप मैंने क्या किया कच्चा चबा के अपनी टट्टी में निकाल दूंगा मैं तुझे चुप मैं कुछ किया Yeah, shouting is not comedy. He's just trying to have fun with it. That's what I'm trying to get at. I'm just trying to have fun with it. He wants to go to his happy place, I guess. अरे पर मैं ऐसा ही रहने का चुप यार कार्तिक इन गरीबों से याद है घर पे बहुत तकलीफ चल रही है यार मैं सोच रहा हूँ रील्स की जगह पे ओनली फैंस पे कंटेंट बनाना शुरू कर दूं गुड आइडिया। इंटरनेट पे बहुत पैसा है लोग क्लीवेज दिखा के यूं भर भर के पैसा कमा रहे हैं अच्छा क्लीवेज मेरी है हाँ है तो सही, बट छोटे थोड़े। अरे तो एआई लगाऊंगा ना एआई लगा के जैसे बड़े कर दूंगा हाँ, और पहला कस्टमर जग्गू होगा। You know what? That's actually a good business idea. Just use AI to sell pictures to stupid guys in the US. I mean, it's not a scam because they're still getting the pictures they want. It'd just be AI. साला कितनी बार बोला है मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाया करो। तुझे नहीं, तेरे बाप को याद कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तेरे घर पे तादाद बढ़ रही है ना, ओनली फैंस ही तेरे घर का चौथा बंटवारा होने से बचा सकते हैं। अरे जग्गू को बोल थोड़ा कंट्रोल करे। क्या है, बीवी है कि प्रिंटिंग प्रेस? काट करके बच्चे निकाल रहे हैं। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मेरा नाम आकाश है, मुझे मेरे बाप के नाम से मत बुलाओ। जग्गू जी Instagram already does that. Ugh. Nobody's gonna pay for them, most likely. इधर है मैं बाजू में जेल में। जेल क्यों अरे बाप का सफारी सूट पहन के निकला ना मैं। तो बाप का सफारी सूट पहने पे तेरे को जेल हो गया अरे वो बाप का सफारी सूट पहन के निकला। एक आदमी मेरे को वैले वाला समझ के गाड़ी का चाबी दे दिया, बोला लेके जा। मैं भी लेके गया मस्त लोनावला। बारिश थी, ऊपर गाड़ पीछे खान खन किसका अरे बैक सीट पे 2 बियर का बाटली नाच रहा था रे, तो गटक गया। तो तेरे को ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में अंदर की है नहीं रे, बियर पीने के बाद मेरे को मूतने आया। Why is it so cheesy? It's because it's written by people that I guess don't truly know comedy, or it's what they think comedy is. I'm not entirely sure. I mean, like, comedy is a genre I would never touch. I would absolutely never touch because I don't understand comedy. I never will. There are things that will make me laugh, but in the end, I've never understood like punchlines. I've never understood like building like jokes and things like that. It's I don't get it. I don't get it. And for this, it's just like this isn't really that funny to me. I'm just waiting for it to get to the ghost part. For it to get to the ghosts. That's all I want to see. Bro, India is full of narcissists. Everywhere is full of narcissists. मैं एक दीवार पे मूतने गया, पीछे से आवाज आया, काय रे तुझे पिचकारी घेऊ का आतमध्ये? तब मेरे को पता चला मैं पुलिस चौकी पे मूत रहा था। तो तेरे को वैंडलिज्म के केस में अंदर की है नहीं रे। Why do they have a murder cage behind them? मैं बोला ले मूत दिया तेरे कानून पे। बस इतनी सी बात के लिए मेरे को जेल में डाल दिया रे। आई गला बुरा मेरे को इस बात का लग रहा है, एक भी बार मेरे को मेरा बाप जेल में मिलने नहीं आया रे पिंकू। कैसे आएगा करण उनका सफारी सूट तो तू पहना हुआ था ना जेल में हो का लवड़िया हाँ मस्करी कर दूंगा माजी हाँ आई गालिया तुम लोग भी कलर दिखा रहे ले। ऐसा कुछ नहीं Oh, okay. That's why there's a murder cage behind them. There's someone there. क्या ट्रिप है ब्रो I get the joke. You get it? You get it? He's got his hot box in the back of a car. He's smoking up weed in there. That's so funny. That's so funny. It's such a funny joke, guys. It's such a funny joke. I get it. You know, I'm not going to lie. It's funny that I actually get it. Speaking of which, yeah, I once was talked into going to a party in San Francisco with my roommates. And this was like the first party I ever went. I went to 2 parties in San Francisco, hated each one. Because the cops actually came to both. Yeah, the cops were called on both of them. But I walked downstairs
and I walked into just a ton of smoke. I didn't realize that it was called a hot box, and they were just keeping all the smoke trapped in with them down there. It was so freaking, I was just like, okay. I turned around and walked away. And then I went to the bathroom, saw syringes on the bathroom sink, and I'm like, all right, I'm just gonna walk outside. And then like 10 minutes later, the cops showed up because noise disturbance, and they were basically chasing everyone out. Injurious to health. Tobacco, please ready the investment before documenting. अरे नशेड़ी, इतना माल फूकेगा ना फेफड़े में झाड़ उग जाएगा। वो झाड़ भी फूक लूंगा मैं। मेरे को भूख लगा यार, फूकने के बाद भूख लगता है मेरे को। पिंकू कुछ खाने के लिए देना मेरे को। Let me drive. करे मेरे को खाने के लिए देना यार। दूर हो जा, मैं कितना मरे देखे रे जो बार-बार मेरे से खाना मांगता है तू। तो औरत बन जाना। Better. Much better. अरे रत्नागिरी का भिंडी दे। I had to speed it up. I had to. तू अकेले है क्या रे? रुक तेरी खेत में तेरे को काटता हूँ, तू क्या कर रहा है? What are you doing? Road rage is never the solution, man. Don't get involved. He left ना. Bro, तू क्या इंग्लिश बोलता है यार? तेरा इंग्लिश सुन के है ना, वो शशि थरूर भी टिप करेगा। I didn't go to a stoner club. It was a house. Uh-oh, first sign of something haunted. चुप करो अच्छे हमारे माँ बाप हाँ जूते चप्पल और गालियों के साथ खाना भी खिलाई देते तुम्हारे माँ बाप की तरह नहीं है अबे वो लोग पीछे दिख नहीं रहे, कहाँ मर गए? भाई तो पिंकू का सोच, वो एक नशेड़ी और एक चोर के साथ एक ही कार में कैद है। हमारा बेचारा बच्चा। बच्चा तो हमारे साथ लेकर आए हैं मिस्टर जशु। यार ये वैसे ये कुदरत का करिश्मा हुआ कैसे हाँ तेरे माँ बाप ने तुझे परमिशन कैसे दी? वैसे तो तेरे को घर में खूंटे से बांध के रखते हैं हाँ। मैं भी वही सोचूं कि साला दाढ़ी वाले सेंटर वाला को 2 नाइट की परमिशन कैसे मिली? अरे जशु सुन ना तेरे घर के पौधों को भी तुझसे ज्यादा सनलाइट मिलती है ब्रो। The only D a woman would want from you is vitamin D। Yeah, people's names are easy to forget every now and then. इसकी जो डिलीवरी हुई थी ना, वो भी होम डिलीवरी हुई थी। इसके जैसे बच्चे स्कूल बंक करके कहाँ जाते थे? ट्यूशन। स्कूल से लेकर ट्यूशन के बीच में जो सफर होता था ना वो इनका जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला रोड ट्रिप होता था ब्रो। बट ऑन सीरियस नोट जशु बता रहे तेरे को परमिशन कैसे मिली माँ बाप की बता ना? वो मुझे डिस्टिंक्शन मार्क्स आए ना तो पापा मम्मी ने बोला कि चले जाओ ट्रिप पे। अच्छा ऐसा रेड कार्ड चालू है घर पे मतलब ऐसा डिस्टिंक्शन मिली तो दोस्तों के साथ परमिशन मिलेगी, टॉप मारा तो सुट्टा फुकवाएंगे, गोल्ड मेडल लाया तो कोक खिंचवाएंगे, जॉब मिली तो थाईलैंड लेके जाके चुप करो यार हद होती है बोले जा रहे हो दुखता है किरण साले बताओ तुझे सविता भाभी के बाद क्या नॉर्मल दुनिया देखिए तूने? See, that's the thing. It's just like they should have just kept it eerie. Why the I can't even say forced comedy because it's not comedy. They should have just kept with people going on a road trip, just having like normal conversations, talking about class, talking about school. This over the top laughing nonsensically, like it makes no sense, or talking about getting out of prison, dressing like a woman, that kind of stuff. It's not funny. However, in any other situation, that scene of them driving past the people would have been far more impactful if it didn't have all of this nonsense there. And yes, like there are like the dark comedies where there's like an amazing comedy and then there's an incredibly dark scene. And then like the next scene is absolutely hilarious. Like Mimi, love that film. Like it goes incredibly dark, but then it turns absolutely hilarious. Absolutely hilarious. And it's just like, I really like it when it can do that, but this one's not. If anything, they should have just focused on the paranormal aspect of it, the scares of it, because horror is the easiest genre to make. It really is, because it's the audio cues, the editing cues, the sound cues. It's primarily just that which really dictates the fear. You could have terrible acting, case in point, in a horror, as long as it doesn't have to do anything else. Yeah, they are overacting. The thing is, that's perfectly fine in a horror, which is why you get a bunch of slasher films, because it's the fear factor that you're there for. It's the editing, it's the audio, it's the actual the design, the atmosphere of it. That's what creates it.
and this forced comedy is taking away from it. It's not horror, actually. Come on, they're going to a haunted house. There's got to have some. वो देख पेड़ और ये पौधे फसल वो देख दूसरा आदमी इनको भी 2 हाथ होते हैं अपनी तरह 2 पैर है देख Again? गाइस वो औरत बोला टर्की बोला अबे गांव की औरतों को तो बख्श दे भक्षक। वो बेचारी लापता लेडीज अपने मटकों में पानी भरने जा रही है कम से कम उस पे तो अपनी गंदी नजरें मत डाल तुम जैसे लोगों की वजह से ही चोली के पीछे क्या टाइप गाने बजते तुम ही हो वो गंदी ऑडियंस ऑफिस में इसकी वजह से 3 लड़कियों ने जॉब से रिजाइन कर दिया उनको अमेरिका में जॉब लगा था अमरावती में फ्रूट बेच रही है वो गरीब लड़कियां फ्रूट बेरोजगार उनको तैयार है लेकिन तेरे साथ एक छत के नीचे काम करने को तैयार नहीं है चमड़ी बाज मैंने रचना को पूछा ये ट्रिप पे आएगी पीरियड्स थे दर्द था बेचारी को फिर भी आने को तैयार थी लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि जगू आ रहा है उसका मामा मर गया और कमाल की बात मालूम है दोस्त उसकी माँ का कोई भाई नहीं है बताओ सोच उस बेचारी नारी पे क्या गुजरी होगी कि उसने तेरी वजह से अपने मामा को जन्म देते ही मार दिया कंस मैंने भी देखा है उस दिन मैं इसके साथ एक रूम में गया 2 लड़कियां अंदर ही नहीं आ रही थी अरे वो जेंट्स वॉशरूम था रूम होता है Yeah, a lot of screaming. टोल गेट चला रहा है कि वसूली सेंटर दे रहे ना कान तोड़ेगा क्या ए यार कैश देना अरे देखो मैंने अभी बोला मेरे को पैसे की तकलीफ है। अबे लाख रुपए थोड़ी मांग रहा हूँ छुट्टे पैसे मांग रहा हूँ तेरे पास है क्या जगह छुट्टे ओनली यूपीआई जस्ट तेरे पास है क्या छुट्टे तेरी मम्मी ने लड़की दिया होगा ना तेरे को ये टोल खुल गया चल क्या बात अरे कर सर पैसे अरे काय खा पैसे उस पैसे का किसमें कर देंगे तू चल किस्मी साले फटीचर टोल के पैसों से कौन किस्मी खरीदता है ये क्या कोगला कर रहा है रे? अरे हम लोग नहीं टोल भरने वाले ये गवर्नमेंट वाला है ए गावात तू चलना वो तेरा आइटम का भाई है क्या अरे ड्राइव हाँ ड्राइव This is way too 2000s Bollywood. Some of it is aged, but guess nostalgia value. I don't know. Like, the thing is, the problem is, I wouldn't mind there being a shouting character. The issue is, they're all shouting characters, really. They're all loudmouths. There should be one loudmouth, and then you have a diversity of different kinds of characters. But no, you have just way too many loudmouths. भाई मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है मैं जा रहा हूँ अरे मुंह तुम्हारी के कितना सुसु करेगा अबे आदमी है कि सिंटेक्स की टंकी चले मजदूर सामान निकाल। तेरे बाप का मजदूर नहीं हूँ मैं तू मेरे बाप का नहीं मेरा मजदूर है चल सामान निकाल। ऐसा सेट नहीं चाहिए मेरे को क्या बोलते हैं कार्तिक भाई क्या है नाला सोपारा के रॉकी रंधा क्या कर रहा है अभी वो मजा नहीं आ रहा है आप मोटे ही अच्छे थे एक तो जिसको देखो यही बकवास करते रहते हैं साला जब मोटा था तो बोलते थे मोटा है अब पतला हो गया तो बोलते मोटे अच्छे थे पर आपका भी वो दबदबा नहीं रहा आप कठोर पत्थर बन गए हो अरे उधर पत्थर छोड़ो इधर मलाई पनीर देखो Stop touching me all the time, you satromaniac. You need to learn about touch, huh? This is good touch and this is bad touch. What pervert you are. यार ये गुड टच बैड टच क्या है यार तुम लोग ने यार मेरे को सरकारी क्रीप घोषित कर दिया है काका नमस्कार मला वाटलेलं तुम्ही वाट बघत असणार इथे काही लागलं ना मी आहे तुमच्यासाठी Content creation and filmmaking are very different. Yes, they are. Yes, they are. And you need to know, like, you can't have one without the other, but one of them is absolutely necessary. Like, you need to know how to do filmmaking. Like, that's what I studied primarily. However, I kind of leaned into content creation because I hate the Hollywood system. I absolutely despise the Hollywood system. So it was easier for me just to get into content creation. I mean, I could do filming and things like that, but yeah, there is a whole science to it. And I know there are genres I could never touch. I could absolutely never touch. The only old movie I know is just 3 Idiots. The fact that you say 3 Idiots is an old movie kind of hurts. Kind of hurts. Because I went back to see Piazza. I loved that movie. Because watching it, it's all black and white, but it's relevant even now. That's what was so amazing about it. You could watch it now and be like, oh, it's made of about this time. It's absolutely amazing. They're throwing punchlines? ये मराठी स्नूप डॉग का कुछ करना पड़ेगा मेरे को उसका बहुत टेंशन Not that I'm noticing. Welcome to Ekaki Villa. That is a shit name, no? Ekaki. पिंकू नाम के लोग दूसरों के नाम पे कमेंट ना ही करे तो अच्छा है मैं अपने बच्चे का नाम फुंसी रखूं फोड़ा रखूं अरे भेड़ का लोड़ा रखूं लेकिन कभी पिंकू नहीं रखूं चले आर्यन होता है कभी कभी किसी की किस्मत उसकी शक्ल की तरह होती है खराब। Yeah, I feel old.
वो थोड़ा ब्रश Three करो ना। idiots. Come on. अरे इसका गांड चाट I love के that आपके मुंह movie. से बहुत बास मार रहा है। ऐसा मुक्का मारूंगा ना सर पे, शैतान की काली गुड़िया बन जाएगा, समझा? हाँ जा जा, लेफ्ट में बाथरूम है, वहाँ पे लैट्रिन वहाँ पर। अबे वो लिस्टेड होता है कवर। ये डिक्शनरी तू मेरे को बताया क्यों नहीं रे? How is this my fault? ओके ओके। क्या सेक्सी बंगलो है यार, पर ये बाहर से बहुत बड़ा दिख रहा था, अंदर से बहुत छोटा है। अबे geographically challenged ये waiting area है। Scary बाकी का Movie बंगला 2 अंदर है। is क्या बात funniest. कर रहा है? ये अमीर लोगों का वेटिंग एरिया भी होता है क्या? हाँ, अच्छा, वैसे तेरी जबान बहुत चलती है केयरटेकर। चलना बोने। Yeah, you guys need to stop saying it's supposed to be comedy or funny. This is not funny. This is not supposed to be comedy. I'm still hoping that it's supposed to be horror. अरे मामे का I'm still बंगला में hoping. ये मत सोचना कि किसी से भी पैसा नहीं लूंगा, सब And they फटीचर just चेक wrote the भरेंगे। characters और हाँ, wrong. दारू का पैसा भी तुम लोग भरोगे। हाँ, और मेरे भी। ए, क्या तेरे भी? तेरे से तो सर्विस चार्ज लूंगा मैं। कार्तिक मैं दे दूँ तेरे को सर्विस? बेबी कितनी बार बोला है वैक्सिंग किया करो, बाल दांत में फंसते हैं। क्या हुआ, लड़की ने पेपर स्प्रे मार दिया क्या मुंह पे? इसको स्किन केयर रूटीन बोलते हैं। तेरे को ना ठरक केयर की जरूरत है, मालूम है? तो एक काम कर, टाइगर बाम ले, अपने टाइगर पे लगा, उसको सुन कर। सुन रहा है? सब बात करना ही बेकार That है। makes sense. अरे साहब, He's basing it off of इधर का his caretaker. YouTube career, हेलो, so हेलो, of हेलो, course. सर जी, कैसे हो? मेरा नाम कार्तिक है। मेरा राहुल, नाम तो सुना ही होगा। सोच, इतने बड़े बुजुर्ग आदमी का भी नाम तुझसे ज्यादा कूल है। राहुल भाई, इसका नाम पिंकू है, बस इससे ज्यादा मैं इसकी जिल्लत नहीं कर सकता। पिंकिया सेठ, नमस्ते। ए व्हाट पिंकिया? पिंकू विद अ यू। पिंकू। अच्छा राहुल भाई, एक बात बताओ, मामा को कब से जानते हो आप? मामा को नहीं जानता मैं। एक महीना, आप इधर कितने टाइम से काम कर रहे मैं सुबह ही आया आज। हो? अच्छा, तो आपके पहले कौन काम करता था? ते बाबा काम करायचं। अच्छा, अकेले रह रहे हो या बीवी बच्चे भी है साथ में? नहीं, मैं कवला है साहब। ओहो, ये तो अस मोमेंट हो गया भैया, इधर गले मिलो यार, गले मिलो यार। आज आपको बियर पिलाता हूं, चलो चलो चलो। अर्ज किया है, जिंदगी ने साथ नहीं दिया, लेकिन हाथ जरूर दिया, हाथ मिलेंगे। साफ क्या कर रहे हो? मैं भी साफ करता हूँ। वो जो क्रीम लगाता है ना, वो कुछ भी साफ नहीं करता है। ठीक है। आर्यन, आ जाना इधर, पूरी रात पटाखे फोड़ते हैं। क्यों? तेरे बाप की दूसरी शादी है? हाँ, तेरी माँ के साथ। तेरी माँ ने बताया नहीं आज बड़ा भाई मिल रहा है। अबे हाफ प्लेट चिकन राइस ना मारूंगा ना। जा, पापा मेरी जान बुला रहे, जा जा जा। गाइस मैं अभी 1 घंटे सोने जा रहा हूँ, प्लीज को डिस्टर्ब मत करना। शाम में ज्वाइन करता हूँ, फिर जल्दी खा के जल्दी सोएंगे। अरे उसको सोने देते यार, लाइफ में पहली बार घर से बाहर निकला है। ए सो जा तू, शाम में मिलते हैं, ओके? रात में फिर मिलते हैं, सोएंगे फिर जल्दी। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? चले चले, लाल परी को जल परी बनाते चला। Later. American humor is the best. I don't know. I honestly don't know. Because again, it's hit or miss for me. क्या कर रहा है? हाथ तो दो। अरे दूसरे हाथ से पकड़ा है भाई। हाँ फिर ठीक है। कार्तिक, ओह नो, नॉट अगेन। तुम्हें देख के मुझे कुछ कुछ होता है। आर्यन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती हूँ। तुम मेरे से अच्छे दोस्त हो। तो दोस्त का फायदा उठाते हैं। छी, गंदे मर्द, फक बॉय। आज तुझे शराब पिला पिला कर तेरी पूरी इज्जत लूट लूंगा। नहीं आर्यन नहीं, मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं करता। लूटेगा क्या? उधर जुगनू जुगनू। चल जुगनू पे सुसु करके देखते 3 इडियट्स की तरह खाने लगता है कि नहीं। अरे अरे छी यार, तेरी मुंह मेरे बोल क्या रही यार। अरे इतना तो चलता है ना भाईचारे में। Guys, क्या है? हट हट हट। जुगनू बायोलुमिनेसेंट होता है। It doesn't carry charge. ये फुनसुक लोडू को क्यों लेके आते हैं हम ट्रिप पे? Yeah, पता नहीं क्यों उसकी kind of शक्ल like देखकर मुझे this. हॉल टिकट की याद। Raunchy jokes. देखना अभी भी नए किताबों की बात आ रही है। That wasn't even funny. That was just stupid. ज्योमेट्री बॉक्स गिफ्ट दिया था ना। Geometry box नहीं, dictionary थी। डिक्शनरी कौन देता है? तू तो पागल ही हो गया होगा। आज मम्मी पापा घर पे नहीं, आज मैं पूरी रात कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स के डेफिनेशन पढ़ूंगा। ये क्या है? ओह माय गॉड, इमैक्युलेट मेटिकुलस निकल गया। ऐसे आते रहे। तेरे को इसकी स्टेशन वाली बात मालूम है? नहीं तो। हम लोग एक बार थाने स्टेशन पे थे, मम्मी कसम बता रहा हूँ, एक गरीब आदमी ने से एड्रेस पूछा। पता है इसने क्या किया? इसने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में आंसर दिया। मर गया वो आदमी उधर ही, सदमे में चला गया। साले फर्स्ट बेंची। बहुत मेहनत करनी पड़ी थी तुझ पे, बहुत बिगाड़ना है तुझे। आर्यन, कितना पोर्शन कवर करना है ना? आज से शुरू करें? चल इधर आ, चल अपना मिलीमीटर दिखा, गाँव वाले देख रहे, चल। अरे क्या डायग्राम के लिए रेफरेंस ले रहे क्या? साले डॉम्स के रबर। यक क्या होता है?
छी होता है तू तो साले छी भी इंग्लिश में करता है चल ए अरे चल थोड़ा टाकी खाली करके आता हूँ। अबे कितना टाकी खाली करेगा चल ना अमर सुन भी मैं तेरी मम्मी से बात कर रहा था वो मुझे कह रही थी कि तू हिंदी पिक्चर की इंग्लिश डबिंग करके देखते है। Oh, VPN, Wait, didn't he already go? Did he stop halfway through? You know how much that hurts? The only British comedy that was good was Monty Python. The only good British comedy. That's it. That is it. Finally. How we are 22 minutes in and finally something's happening. Finally something is happening. It's I get it. I get it. You want to have fun. You want to have some comedy. But again, sometimes less is more. Especially when filmmaking, you got to realize in like I love film, so I do this kind of stuff. I love studying it. So in the making of the Jaws, making that making that shark cost so much money that Steven Spielberg tried to get as much footage of it as he could. And then in the editing room, his editor continued. She always told him, you need to remove this, you need to remove this, that they ended up with like only 5% of the actual shark shots they had originally shot. Because it would just look too flake, it looked too plastic, and they ended up realizing that with less seeing of the shark, it just was more impactful, was far more impactful. And right now it's just like he's trying to push everything into this, that it's not actually hitting. Because finally when something happens, it's just like, oh, thank goodness. Thank goodness. And, you know, kind of like when you're stuck in a conversation with someone you don't want to speak to, but you're waiting for something to happen so you can get out of it. This is that moment. It's going to be another joke, isn't it? Oh my gosh. Of course they have to have the dancing and everything. It's so cheesy. So cheesy. Many iconic creators, many indie creators make better content than this. Yes, yes, absolutely. That's it. I'm confused. That's why. I guess judging by this, you won't like the Stree horror movie. I love the first Stree movie. I loved the first Stree movie because that moment where you realize who his mother was and nobody else, everyone else in town knew except he didn't. That moment had me laughing nonstop. It was so well done. Stree 2 is absolute garbage. Absolute garbage. It's like one of the worst films I have seen. Yeah, and the tonal shift, absolutely. At least they were trying to keep the horror element for a bit with the flickering lights, but I didn't like how they were cutting back to them dancing inside. Yeah, the first Stree is absolutely great. I don't want to risk getting hit with music. Oh, they're just doing the dances. There go the lights. Yet made more money. People are stupid. Yes, yes, absolutely. Again, I don't like how people are like have such a fan base towards things. If something isn't good, just be honest.
Just be honest. You don't have to back everything that you're told to back. Like Stree, absolutely amazing, but not everyone would enjoy a movie like Stree. Stree 2, sure, maybe a few people enjoyed it, but then again, let's be honest, it wasn't good. I still haven't seen the others in the universe, but after Stree 2, I was like, maybe not. Yeah. Indian films really do like to mix tones. Absolutely. Sometimes they're amazingly well done. Like it's a complete whiplash, but it's so well integrated that it works. It does not. It does not. It does not. अबे तार देव की टेलर स्विफ्ट चिल्ला क्यों रही है? तू कब बैठा यहाँ पे? अभी तो सिर्फ बैठा हूँ। Ha! A Taylor Swift joke. I get it. Finally, a joke I understood. So there was the box, the whatever it's called, the smoker's box, and then a Taylor Swift joke. I'm so happy with myself. I mean, they weren't funny, but I'm happy with myself. इसको क्या हुआ? First day of the month. बोलो ना साहब। पहन के मुझे डरा क्यों रहा है? क्या हुआ साहब? कोई भूत देख लिए क्या? पहले तो ये नीचे कर, ये नीचे कर। और मेरे को एक बात बता, ये बंगले में कार्तिक के मामा से पहले कौन रहता था? मत पूछो साहब, मत पूछो। क्यों नहीं पूछूं? आज से 25 साल पहले 25 साल पहले क्या? इसी प्लॉट पर इसी प्लॉट में क्या? एक अस्पताल हुआ करता था। अस्पताल? कौन सा अस्पताल? पागल मरीजों का। एक से एक पागल रहा करते थे यहाँ। सारा दिन चिल्लाते रहते थे, दीवारों पर अपना सर पीटते रहते थे। Stick to comedy or horror, that's what Hollywood does. Hollywood has lost its talent. I'm hoping, well, Hollywood's going broke, actually. It's going broke. So hopefully the industry dies and someone else can take its place. You know, people that actually care about cinematography, people that care about story, people that actually care about making good films and not, like, slop. और वो सारे पागल रात को अस्पताल की सभी लाइटें बंद चालू करते रहे। टिक टॉक 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 ठीक है। उसके आगे क्या? क्या? कभी कोई पागल गांव वालों को पीटना शुरू कर देते, तो कभी कोई पागल मैदान में नंगा दौड़ने शुरू कर देते, और तो और एक सरफिरी पागल औरत वहां पीछे दरिया में वो दरिया कूद गई साहब। पूरा गांव उनसे बहुत परेशान। फिर एक बार एक बड़े आदमी ने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। फिर क्या? फिर एक महीने I swear you guys are just joking with me. I'm getting too many world leaders in my chat now. Way too many world leaders. Hollywood horror is bad as well. Weapons was the only good one I heard recently. Yeah, Weapons. I think there was another one that I actually did enjoy. Oh, at the beginning of last year, I also did enjoy The Damned, but that wasn't Hollywood. That was more of an indie project. तक तो कुछ नहीं हुआ साहब, लेकिन एक महीने बाद मरीजों ने डॉक्टर को मार दिया? नहीं। डॉक्टर ने मरीजों को मार दिया? नहीं। काम वालों ने मरीजों को मार दिया? नहीं। तो फिर क्या? वो सारे पागल यहाँ से शिफ्ट हो गए भिवंडी। भाई, तो उसमें क्या है? साहब भिवंडी का भाड़ा इतना कम है, फिर भी उनकी एडमिशन की फीस उतनी ही है साहब। ये तो गलत है ना साहब? अबे विक्रम भट्ट की मूवियों के सस्ते माली तब से डरा रहा है। क्या भी उस चक्कर चल? आपके दोस्तों को भी भिवंडी जाने की जरूरत है साहब। जा यहाँ से, बड़ा पत्थर फेंक के मारूंगा जा। पागल साला। एक तो इसकी आवाज घूम रही थी चुपचाप कहीं तो समझ नहीं कि ये तो आत्मा नहीं है। The thing is like they can't even get the audio cues right for the horror, for the jump scares. They can't even get that right. I swear, I'm going to end up having a world war happen in my chat at some point. Because now I have Modi in here.
You know, it'd be funny if someone named Trump joined the chat and just started dictating to everyone as if he was the boss. I would actually find it funny. It would be hilarious. Is this what slow torture looks like, making us watch this? Yes, yes, absolutely. I mean, there is like a visual torture that can be received, but hey, look, he's doing it too. अबे वो हिल रहा है अरे दो पैक मार तू भी हिलेगा अबे वो पीछे हिल रहा है अरे हिलाना बंद कर उसको नहीं अच्छा लग रहा है जब देख चालू हो जाता है पब्लिक ऑफेंडर अरे चक्कू के पीछे पेंटिंग हिल रही है चक्कू के पीछे पैंटी दिख रही है अरे मैं कुछ पहनता ही नहीं हूं अंदर से उसको कैसे दिख रहा है क्या दिख रहा है भाई अरे म्यूजिक बंद करो म्यूजिक क्यों बंद किया? हट कार्तिक ये पेंटिंग हिल रही थी क्या हाँ ये पेंटिंग हिल रही थी ये पेंटिंग हिल रही थी हाँ कब हिल रही थी जब तुम लोग नाचे थे तो ये बुढ़ा भी नाच रहा था ये बुड्ढा नाच रहा था हाँ। अरे ये बुड्ढे की शक्ल देख ये सूखी टहनी जीते जी नहीं हिली होगी तू मुझे कह रहा है मरने के बाद वाइब्रेट कर रहा था कार्तिक मेरी बात समझ इस घर में जब से आया तब से वियर्ड चीजें हो रही है अच्छा। हाँ जब मैं वो चूतिया केयरटेकर से बात करने गया था तब मुझे चिल्लाने की आवाजें आई हाँ चिल्लाने की आवाज है अरे डरावनी चीखें थी वो बताओ भाई बीडीएसएम गांव तक पहुंच गया और लोग बोलते देश उन्नति नहीं कर रहे अरे भाई दर्द भरी डरावनी चिल्लाने की चीखें थी वो और उसे डराना था ये पेंटिंग का ना लाइट का फ्लिकर होना बस इतनी सी चीजों से तेरे को लग रहा है कुछ वियर्ड हो रहा है अरे यार देखो ना बचपन से इतने वहम होते हैं ना क्या बता When I mute the video, you start questioning your life. Yes, yes, absolutely. That's what's funny is I mute it and I'm like, I can actually think. I can actually enjoy something for once because the video, this show just is so bogging down. I feel so freaking slow. स्कूल में मेरे को बोलता था प्रिया को इसके ऊपर क्रश है बताओ इससे बड़ा वहम है कोई वहमी भड़वा बनना बंद कर और पार्टी मत खराब कर दारू पी चिल कर और हवा खा अब बोल वेमी भड़वा कौन है बोल ये लाइट गई होगी लाइट तो चालू है तो फैन गया होगा फैन ऐसा रुकता है तो फ्यूज गया होगा फेस गया होगा या ये फैन का पूरा फेस चल रहा होगा कार्तिक तूने लॉस ऑफ मोशन इनर्शिया फिजिक्स के बारे में सुना है कभी आर्यन तेरे को मालूम है ना स्कूल में जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तब मेरे को जॉन्डिस हो गया था मैं एब्सेंट था तू टॉन्ट मार के क्या बोल अरे जॉन्डिस हुआ था तुझे अंधा नहीं हो गया था तू किसी अनपढ़ आदमी को भी जाके पूछेगा ना वो भी देखो बता कितना वियर्ड है ये अरे करण बता ना उसको कितना वियर्ड है ये हाँ वियर्ड तो ए गवाड़िया अनपढ़ बोल के मेरे को क्या पूछ रहा है रे? Yeah, it's just the YouTuber's first project. Yes, honestly, I think what someone should do is take all of the series from the like download them all and create a movie out of it. Because if you cut out all this absolute nonsensical comedy and just have a few of the heartfelt moments and a few of the key moments of showing horror, you might actually have something genuine to watch. It's just this over-the-top acting that just doesn't fit. Trying to force the comedy. I fixed the fuse. Okay, so at least they're getting better. तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक आत्मा है तुम्हारी बेटी के अंदर एक भयानक
Guys! अभी earthquake आया था ना? Okay. Well, they had some heart. No, I don't know. They need to get a different writer. They need to get a different writer for the series. That's just it. I think everything else works fine. They just need a writer. Someone that can actually write a decent story. That's just it. That's all it really needs. Everything else is just so freaking boring. Absolutely. Absolutely. Oh. That was a pain to watch. That was a pain to watch. Absolutely. Absolutely. I'm not going to joke around with that. That was a pain to watch. Hopefully, episode 1 was just kid. Yeah, well, hopefully it gets better over time, because I don't see how it can get worse. I'm going to be honest. I don't see how it can get worse. I can only see how they can improve. I can only see how they can improve. I'll probably see the next one another day. I'll see the next one another day. So bad. And don't forget to like and subscribe. Wait, wait, Sandra.